Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. Here I am with the first episode of Fit Chat with Gaurav. अभी आप सोचोगे Fit Chat with Gaurav क्या है? ये हमारी ये सीरीज है जिसमें we are gonna talk with all the influencers to whom we are training and they are gonna share their experience with It's All About Journey and sneak peek into their daily routine, their fitness routine, what meals they are having and what workout they are doing. So just stay tuned for this amazing series with influencers, and in the first video of this series we have Heer Naik with us. So we have a very special influencer here जो कि बहुत चुलबुली है. उसका नाम है हीर नाइक. Without any further ado, let's welcome Heer Naik, a girl next door. How are you feeling now, Heer, after coming to the episode of Fit Chat with Gaurav? Thank you for inviting me. Of course, I'm very obliged to be here. I'm very happy to be talking with you because obviously It's All About Journey has helped me a lot. So anytime, any day, I'll be present for you guys. So here, before jumping into any conversation, I would like to appreciate you for whatever efforts you are doing. You are the best influencer we have ever got. Very hardworking, very dedicated towards the fitness goal. So how you are collecting this motivation from surrounding? कहाँ से आ रहा है ये motivation इतना fitness goal achieve करने का? Well, my strategy एक है कि मैं बचपन से खुद को ऐसे विजुअलाइज करती हूँ कि मेरे गोल के बाद मैं मतलब once I reach the goal, how I'm gonna look like, what it is like. So the visual picture that I have in mind keeps me motivated that I have to go towards that. Like ऐसे determination चाहिए, and because I want that picture to come into life basically, because I'm just that kind of person. So you said that we're gonna play some games, so कब खेलना है? Are you excited for this? हाँ. Do you think it's gonna be a catwalk or something like that? No, I think it's gonna be something badass like fitness. Yes, like, it's gonna be a badass Fine, fitness challenge and which you have to perform. So basically I'm gonna give you two options. दोनों में से एक कुछ तो करना है, ठीक है? First one is you either you have to do a plank and sing a song. Second one is you have to do wall push-ups and sing a song. So what you wanna choose? I think I'll do one push-up. Easy वाला एकदम हाँ. What song you are singing? Let's hear the song, guys. 2, 3, 4. Come on, come on, come on. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. Good job, good job. क्या बात है? Yes. So I have one more task for you. That's gonna be either you have to do squats by taking weight in your hand, or you have to take a water bottle in your hand and you have to do bicep curls. वो भी ऐसे रहेंगे. You have to start with 38 and you have to do the reverse counting and complete it till the zero. Go for a bottle वाला challenge, bicep curls. I have. Awesome. ये तो पूरा डंबल है, ये बॉटल नहीं है. हाँ, this is the amount of water I drink, maybe double. Go for it. Okay. 38. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. बहुत बढ़िया. यहाँ पे आपने प्रूव कर दिया कि आपका रांझा फिटनेस के साथ मैथमेटिक्स भी है. Thanks for completing this task and let's put this little game aside now and let's get back to our chat. So basically you went to US in 2015, right? Yeah. So, no, 2013. Okay, 2013. So it's been more than 7-8 years now, right? So काफ़ी बार ऐसे होता है कि इंडियन लोग यूएस में जाते हैं, उनको वहाँ पे मैनेज होना इट गेट्स डिफिकल्ट टू देम टू गेट मैनेज ओवर देयर विद अदर पीपल. किसी के साथ बुलिंग होती है, किसी को इन्वायरमेंट के साथ मैच होना मुश्किल हो जाता है, एंड सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कभी कभी हेट आता है यूएस के लोगों से. तो हाउ यू मैनेज टू स्टे इन द यूएस विद अदर पीपल आफ्टर गेटिंग टू अमेरिका? I think it at least took me 7 years to like start liking the surroundings environment here. Bully तो मैं हुई हूँ बहुत time. So it's
I think it took me a while. फिर हमारे जैसे लोग भी मिले मुझे तो I'm like okay it's not that bad after all. There are people like me. यूनिवर्सिटी में भी बहुत इंडियंस है तो ऐसे एडजस्ट हो जाता है. फिर मैं यहाँ के लोगों के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब बन जाता है तो yeah it's fine. You learn, you adjust. And what's the experience with US people जो उनके उधर के ग्रीन मतलब born and brought up in US जो लोग रहते हैं जिनको हम लोग गोरे बोलते हैं तो what is your experience with them? वो कैसे रहते हैं मतलब? They are very chill. मतलब ऐसे वो gossip यहाँ पे नहीं होता है कि जो इंडिया में होता है. ये बंदे ऐसा. हाँ. ये वो देखो वो देख क्या कर रही है वो देख वो क्या कर रहा है ऐसा. हाँ. अभी तुम कोई लड़के के साथ दिखे लड़की कुछ भी हो दे डोंट केयर. नोबडी केयर्स. तेरी लाइफ में कुछ कर जो करना है. हाँ वो वार्मथ होती है वो इंडिया में फील होती है यहाँ पे कम होती है वो फील बट स्टिल ये मतलब पर्क्स एंड कॉन्स ऑफ एवरीथिंग मतलब प्रो एंड कॉन्स ऑफ एवरीथिंग बट यहाँ के लोग भी बहुत चिल मुझे लगता है. What do you think about which culture you like? Like, do you like Indian culture or US का culture? I like Indian culture better, obviously. Why? What's the reason? It's just that थोड़ा ऐसे warmth ज़्यादा रहता है मतलब ऐसे अपनापन थोड़ा लगता है. अच्छा. फिर the festivals and all the fun things. So मतलब इंडिया में मिलती है छुट्टी क्रिश्चियन हो या मुस्लिम की हो या हिंदू की हो तभी छुट्टी होती है. यहाँ पे नहीं होती है. यहाँ पे बस एक ही होती है क्रिसमस. So it's good that even after living for 7-8 years in the US you still like Indian culture. ये सुन के Indian viewers को बहुत अच्छा लगेगा. Anyways, what are your future plans? What are your future endeavors? Where do you see yourself in coming 5 years? What you want to achieve in your life? Tell us. Coming 5 years, I definitely will have a degree. That's like a definite thing that Be more specific. I'm studying information systems, so I'm hoping कि उसी में कुछ तो excel कर लूँ, कुछ करूँ और फिर मेरा जो passion है वो मैं pursue करूँ खुद के पैसों से खुद के पैरों पे खड़ी होके after that. So we'll see. ज़्यादा मैं बात नहीं करती इतनी तो खुद ही अपने दिमाग में सब रखती हूँ कि हाँ ये करना है. But हाँ definitely I want to study, get a good degree and have my own money. That's very good. ये जो ड्रीम्स है हीर के ये हर एक लड़की के होने चाहिए ये वीडियो देखने वाले कि खुद के पैसे पे सारी चीज़ें करना है. सो एवरी गर्ल शुड बी लाइक हीर. खुद का पैसा कमाओ खुद के पैसे से पढ़ाई करो खुद के पैसे से अपने पूरे शौक पूरे करो. बहुत अच्छा है यार बहुत सही है. I really hope that you fulfill all of your dreams and be this amazing and fun-loving girl, Heer Naik. And before we wind up this, we have one more little game for you, and which is gonna be a rapid fire. Oh wow, I'm ready for that. You know that. So here are the basic rules for that. मैंने क्वेश्चन पूछने के बाद इंस्टेंटली उसका आंसर देना है और अगर वो आंसर नहीं आया तो उसका पनिशमेंट मिलने वाला है. एक तो पनिशमेंट मेरे से मिलेगा नहीं तो पनिशमेंट तुम्हारे पर्सनल ट्रेनर से मिलेगा. मैं करूंगी नहीं. करना तो पड़ेगा. So are you ready for the rapid fire questions? Yes. When I say Heer Naik, what's the first thing that comes in your mind? A bubbly girl who is very determined. Awesome. Here's my next question. India or the US? Choose one. India anytime. हम तो इंडिया में रह के चाहते हैं यार कि उधर का कल्चर कितना अच्छा है. इंडिया में मैं मतलब इंडिया आई लाइक बट आई प्रेफर कि मैं यहाँ पे ही रहूँ. सेटल तो मेरा यहाँ पे ही रहे बट अगर इंडिया में इंडिया ही जाऊँगी मैं मेरे लोग यहाँ पे. Here's the third question. One thing you love and one thing that you hate about It's All About Journey. I don't really hate anything. The thing that I love the most is constant 24/7 you guys are available. So कुछ तो रहेगा यार that you must be hating. We want to know that so that we can do improvements. Hate तो नहीं है कुछ है तो सोचना है मैं सोच भी नहीं सकती होता नहीं क्या. Thanks But a lot. Yeah. Out of the YouTubers from your circle, who is your favorite one? My favorite, हाय तुम तो ऐसे रिश्ते बिगाड़ने चाह रहे हैं मैं खुद. That's what I was expecting. Sorry friends, everyone.
Your next question is, who is your favorite journey master from It's All About Journey? 2 Malika and Rohan. मतलब हमारा तो कुछ रोल ही नहीं है। ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ हमको ਤਕਲੀਫਾਂ पूरा ਨਾਲ ਡੀਲ hate ਕਰਨਾ है। ਹੁੰਦਾ। Next question is, okay, so when you hear the name Gaurav, what's your first thought? Determined, just like me. I feel like you also go for it when it comes to something that you want. Thanks a lot. Daddy's girl or mama's world? Oh, dad, depends on the situation. I can be daddy's girl and mama's girl. Okay, good. One last question is, quickly tell me how to make your favorite recipe, paneer. क्या था वो? Paneer gappa gappa. Paneer gappa gap. Quickly tell us how to make It's paneer very gappa gap. simple, guys. पहले तो you put olive oil and then you let your veggies cook and then you start putting masalas like आमचूर powder, kitchen king मसाला भी चल सकता है, गरम मसाला भी चल सकता है, धाना जीरू को क्या बोलता है मुझे नहीं पता, धाना जीरू इन गुजराती, हल्दी, लाल मिर्च, salt of course, and then garlic powder, and then you put your paneer and then it cook. खत्म, simple, quick. टेस्ट कैसे लगता है उसका? अच्छा ना? अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, हाँ. So here's the last thing. Tell us about anything in 1 minute. See, you asked me what I hate about It's All About Journey. I hate that you guys are so fun. ठीक है, आ जाएंगे हम लोग, पास में आ जाएंगे. हाँ, मेरे को आना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है. We'll plan a business trip to US and we'll definitely come to meet you. Probably उसके पहले तुम भी आ सकते हो यहाँ पे. हाँ, मेरे दो फेवरेट जर्नी मास्टर को लेके आना, अकेले मत आना. So here we have completed all the rapid fire questions and also we have completed all the questions of our interview. Anything else you would like to ask me? Anything you would like to say to the viewers जो वीडियो देख रहे हैं उनको कुछ बोलना है It's All About Journey के बारे में, फिटनेस के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में? Go for it. पर्सनल लाइफ के बारे में तो कुछ है नहीं एकदम बोलने को, बट व्हेन इट कम्स टू इट्स ऑल अबाउट जर्नी, if you are looking to live a healthier life like for your entire life, then you should definitely get someone like It's All About Journey. I have actually even recommended a lot of my friends who are from here, I not know. even Indian. So, yeah, exactly. So I think you guys should opt for something like this where they are present for you 24/7 and who can guide you through everything you have. मुझे अभी ऐसा Yes. लग रहा है मेरी ऑलमोस्ट डिग्री आ गई है न्यूट्रिशन और वर्कआउट में. मुझे अभी सर्टिफाई होना है और मुझे यहाँ पे टीच करना है. जरूरत नहीं है अभी वो करने की, हम लोग ने सारा सीखा दिया है ऑलरेडी. ठीक है. बट मेरे को जॉब नहीं मिलेगा ना सर्टिफिकेशन के बिना. So why you are get into the fitness thing? Because I can make it my side hustle just like social media is. But still at the end of the day we guys will be training you, huh? Of course. मेरे ट्रेनर अलग है बट मैं तेरी ट्रेनर हूँ. ठीक है, that's good. I like the way that the fact that you want to get into fitness journey just because you have started loving your workout sessions and healthy nutrition plan. And thank you so much for being here with us here in Fit Chat with Gaurav series, and we'll be posting a lot of other things also on this YouTube channel. So tell your viewers also to like, share and subscribe to our YouTube channel. Yes, guys, make sure you like, subscribe and share this channel, and make sure you give all the love to this video. So make sure you comment how you feel, and make sure you comment what's Dhana Jiru in Hindi. ठीक है. Thanks a lot for being here. Keep grinding, stay fit, stay healthy, and keep eating your paneer ghappa gap recipe. OMG guys, that was a really fun chat. I hope you just loved it. अभी तो बहुत सारे celebrities और influencers से बात करने हैं. So just stay tuned for the more episodes of Fit Chat with Gaurav. And till then, do like, share and subscribe to our channel, and also tell what you feel like this in the comment section.